Good evening. Am I audible, visible? Can you just give me a thumbs up? Hi Tejal, good evening. Chaitanya. Who else? Okay. So, as we know, today we have to start the topic of Marxism. Marxism we have already discussed with Karl Marx. The questions must be bit easy. आपने देखे होंगे जो दो questions मैंने दिए थे, एक socialism पे, एक Marxism पे. They were a bit easy. Next topic is feminism and the post-colonialism, I guess. यही है ना next topic. That we will be doing, or postmodernism जो भी है. So that we would be doing tomorrow. But as of now, you can see दोनों questions are somehow done and dusted. As I've also announced in the Telegram chat group that in case if your answer gets selected as a good answer every week, so I'll be sending you the PYQ book. Okay, so that you would be receiving through in the hard copy format. Fascism, yes, sorry, fascism and the feminism. ये दो topics हैं. So this is day 11 of the 60-day challenge. So on day 11 we have again we have to discuss the same topics. The first one is socialism, another one is Marxism. Socialism को अभी तक हमने in depth नहीं discuss किया था in that format. Do you have the question paper with you? एक बार question paper भी just keep handy with you. So D11 question paper, question number 1. Should I start? Question number 1 was, just a moment. Notes, Chaitanya, notes would be ready by the middle of October. By the middle of October, you would be getting the updated notes. है ना, तो अभी तो I am providing some pointers to you. कुछ pointers I have provided, but that would be converted into a full-fledged holistic notes by the end of or middle of October. हम मान के चलते हैं around दिवाली 15th और 20th के बीच में, so that at least you are able to cope up with your 1A and 1B. At the same time, I'll be coming up with a 500 question and answer book somewhere in the middle of this month only, or somewhere in the end of this month. So you can purchase that as well. So that would help you in preparing 500 plus answers. That would consist of PYQs, probable questions, new questions, the changing trend. So that is again under process. You'll be getting a notification for this soon. Now, the topic is that socialism is essentially an economic doctrine that grew as an alternative to capitalism. ये था question, that socialism happens to be economic doctrine that grew as an alternative to capitalism. Now, what exactly is the keyword, or what exactly is the theme or the demand of the question? Question is about that try to highlight the benefits of socialism vis-a-vis capitalism. So it is all about that how socialism grew as an alternative to capitalism. In such questions or in the questions of socialism, you can always have a ready definition. आप हमेशा एक ready definition रख सकते हो, ठीक है? Clear? तो आप एक ready definition रख सकते हो. Like let us say Schumpeter says that, what does he say? He says that socialism is nothing but it is an organization of society. It means that the resources are controlled collectively, economy is planned
by a public authority. So there can be a definition that as per the Joseph Schumpeter, the term socialism means where the society is highly organized, where the means of production are controlled by the public authority and economy is controlled through planning. So this is where you can come up with a very simple straightforward definition of socialism. Or you can use Karl Marx, or you can use the Friedrich Engels. They can also be used for these kinds of definitions, but ये जो Schumpeter की definition है, this comes very handy, इसको आप याद कर सकते हो. On the other hand, yes, you have the other scholars as well. You can tell them about the other scholars. There have been Karl Marx, happens to be the scientific Marxist. At the same time, there have been Engels who tried to implement the same ideas. तो इस तरह से there can be one paragraph on socialism. We have a 15 marker. So 15 marker में first paragraph would be devoted in writing down the definition of socialism. ठीक है, socialism की definition को हम लिखेंगे. Now what next? The topic is about how it grew as an alternative to capitalism. Capitalism के alternative में कैसे grow किया, तो उसके लिए हमें बताना होगा कि there were certain crises in the capitalist system. You have to tell them about, क्योंकि 15 marker है, you have to tell them about the evolution of the problems in capitalism, the gaps in capitalism, the crisis of the 18th century capitalism. ये आपको बताना पड़ेगा. 18th and 19th century में capitalism में जो issues थे वो highlight करेंगे in just one paragraph. Now third paragraph would be telling them about that how this particular idea evolved. It evolved through by the criticism of individualism, because there was a lot of individualism going on. There was a lot of socio-economic inequalities going on. There were demand of the cooperative movements, okay, by Robert Owen in Britain. Then there was industrial revolution going on, and ultimately the early capitalism was creating a lot of crisis. So this is how you can tell them in two paragraphs that there was crisis in the system, and to fill up that crisis and to ensure that such crisis should not overcome the human, the idea of socialism was implemented, or it was discussed. Now third thing is, what exactly is socialism? Now you are going to tell them what is socialism, because look, it's a 15 marker, so we have to at least write the context of the evolution, that what is the idea, how did it grew, and currently what exactly this idea consists of, what are the core features of this idea. Now third paragraph onwards or fourth paragraph onwards, usually you can tell them about the features, the core tenets of this particular idea called socialism. Fine. अब क्या क्या core tenets of this idea? That it focused upon the substantive equality, it focused upon the absolute equality, it focused upon the freedom in the economic sense, it focused upon the freedom from the basic necessities, focusing upon the sharing system, focusing upon the sharing the surplus and a need-based economy, and at the same time collectivism and cooperation. These can be, acha, over here you can use the pointer format. Let us say you can tell them about the core tenets of socialism are as follows, and there can be pointers, because in such answers writing down the pointers will help you in maximize your content. Otherwise you would be repeating the same thing in your paragraphs. तो आप क्या करो, यहाँ पे pointers को लिखो and through the pointers list each of them, एक एक करके उसको list करते जाओ, ठीक है. Then obviously on the other hand you have it is the economic doctrine. How come it is the economic doctrine? ये भी हमें establish करना है. That it talks about the collective partnership, ownership, sorry. It talks about the planning over profits, planning over markets, and it talks about the redistribution of resources. So these ideas are again very much handy in, और these ideas are the basic tenets of the socialism. तो आप क्या करेंगे, ये जो सारे पॉइंटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जो यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है, माइंड मैप दिख रहा है, थ्रू दिस पर्टिकुलर माइंड मैप यू वुड बी एबल टू राइट मोर देन अ पेज. तो हम ऑलरेडी हाफ पेज लिख के आ चुके थे, क्वार्टर पेज लिख चुके थे. नाउ दिस वुड टेक यू टू अनदर वन पेज. तो आपने 2 पेजेस पूरे कर लिए. नाउ आफ्टर राइटिंग डाउन दीज 2 पेजेस यू हैव टू टेल देम दैट यस, एवरीथिंग अबाउट the socialism is not right. सोशलिज्म की प्रॉब्लम्स भी हैं. सोशलिज्म की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, जैसे उसका एक लिबरल क्रिटिक भी आया, उसके फेलियर्स भी हमने देखे. एट दी सेम टाइम इसको हमने अथॉरिटेरियन सिस्टम भी समझा. फिर आप इसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ड्रॉ कर सकते हो. नेवरदलेस अगर हम डेविड हार्वे की बात करें, अगर हम जोसेफ स्टिग्लिट्ज की बात करें, या इन जनरल अगर हम पेंडेमिक्स की बात करें, टेररिज्म की बात करें,
या हम मॉडर्न क्राइसिस की बात करें, थर्ड वर्ल्डिज्म की बात करें, इन दो सिनारियोज दिस टूल बिकम्स वेरी हैंडी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल है जो हमें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की इनइक्वालिटीज़ को, क्राइसिस को पढ़ने में हेल्प करता है। इनफैक्ट ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, सो लाइकवाइज यू कैन मूव फॉरवर्ड। अब ये करते करते आप ऑलमोस्ट 2.5 पेजेस पे आ चुके हो। एक बार जल्दी से क्विकली रिकैप कर लो। हमने फर्स्ट में लिखा अबाउट द आइडिया, डेफिनेशन लिखा। दूसरे में हमने उसका इवोल्यूशन लिखा। इवोल्यूशन लिखते समय हम कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं। देन कोर टेनेट्स ऑफ सोशलिज्म की हमने बात करी। यहाँ पे आप स्कॉलर्स में कार्ल मार्क्स लिख सकते हैं। सोशलिज्म में आप अर्ली सोशलिस्ट में रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फोरियर को मेंशन कर सकते हैं एंड फ्रेडरिक एंगल्स को मेंशन कर सकते हैं। 4-5 स्कॉलर्स आर मोर देन सफिशिएंट। देन राइटिंग डाउन द कोऑर्डिनेट्स, आफ्टर राइटिंग डाउन द कोऑर्डिनेट्स आप इसको क्रिटिसाइज करा सकते हैं कि दिस आइडिया हैज बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड बाय द लिबरलिस्ट, द लिबरल्स हैव क्रिटिसाइज्ड देम, मेनी स्कॉलर्स सेज दैट दिस पर्टिकुलर आइडिया हैज रिजल्टेड इनटू द ऑथोरिटेरियन सिस्टम। और आप बता सकते हैं किस तरह से सोवियत सिस्टम जो है या क्यूबन सिस्टम, वेनेजुएलन सिस्टम इन द गार्ब ऑफ सोशलिज्म created a highly dictator state and which ultimately got failed। वहाँ पे फेलियर देखा गया। लेकिन nevertheless in the 21st century this idea is still highly relevant। What is relevant over here is that in the garb of pandemics, in the backdrop of the failure of the neoliberalism, in the backdrop of the new inequality or the rising inequality across the world, the idea of socialism becomes very handy in solving the crisis and the problems of the third world। इसीलिए लास्ट में आप हमेशा इस बात से एंड करेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। नीदर प्योर कैपिटलिज्म नॉर सोशलिज्म, देयर हैज टू हैव अ मिडिल पाथ, देयर हैज टू बी अ मिडिल पाथ so that the countries would be able to sustain or would be able to address, or the world would be able to address the global crisis, global inequality and should focus on sustainable development। Getting this? ठीक है, मॉडल आंसर D9 से नहीं अपलोड हुआ। ठीक है, आई विल डू दिस। D9, D10, D11 ये तीनों मैं अभी अपलोड कर देता हूं। तनु, यू आर रिलाइंग ऑन माई नोट्स पॉइंटर से देखो। इफ यू आर ऑलरेडी डन विद योर फाउंडेशन, दोज नोट्स वुड बी वेरी हेल्पफुल। अगर आपने फाउंडेशन कहीं से नहीं किया है, यू आर डूइंग ऑन योर ओन, तो आई विल कम अप विद द न्यू नोट्स। एक बार वो गो थ्रू कर लेना एंड कीप दिस पॉइंटर नोट्स फॉर योर मेंस राइटिंग। वैसे तो ये पॉइंटर नोट्स भी आपको हेल्प करेंगे इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, इफ़ यू आर एबल टू लिंक द पॉइंटर्स, तब भी ये नोट्स आपके लिए आपकी प्रॉब्लम को फुलफिल कर लेंगे। बट हाँ, मेक श्योर PYQs करते रहना साथ साथ। इन पॉइंटर्स के साथ PYQs बिकम्स एसेंशियल, क्योंकि देखो इसमें पॉइंटर्स में सब कुछ कवर नहीं कर सकता। वो मैंने बनाए थे फॉर दी मेंस राइटिंग स्टूडेंट्स, जो लोग मेंस लिखने जा रहे थे उनको कुछ एक क्विक हैंडी नोट्स चाहिए थे, तो मैंने इसलिए बना दिए थे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिज्म। आर यू फाइंडिंग दिस मॉडल आंसर्स आई मीन लाइक हेल्पफुल, वर्दी, और यू वांट मी टू ऐड समथिंग? वैसे तो दे आर देमसेल्फ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा इसमें हम कुछ ऐड नहीं कर सकते। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन 15 मार्कर आस्क्ड इन 2019, व्हाट इज द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिज्म? मार्क्सिज्म का क्या कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आस्क्ड इन 2019। नाउ अगेन इस तरह के क्वेश्चन बिकम्स दे कैन बिकम, or they are basically the important questions or favorite questions of UPSC। they can be asked again and again, क्योंकि till the time you will have global inequality, till the time you will have global crisis, marks would always remain relevant। marks का relevance खत्म नहीं होगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है contemporary relevance of Marxism। now let us try to structure this। इसको स्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं। जैसे स्ट्रक्चरिंग में फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू डिफाइन what exactly Marxism is all about, the idea behind Marxism, then what are the basic tenets of Marxism, then obviously relevance of Marxism, क्योंकि क्वेश्चन पे फोकस तो यही करना है। तो अगर हम ऐसे समझें कि this will go into one paragraph, this will take 2 paragraphs, this would be the core of your answer। यहाँ पे आपको at least more than a page you have to devote। so together this would come to around 2 pages। अगर 3 pages में लिखना है 15 मार्कर है, तो this would come to around 2 pages and these next 2 you can say structural points, criticism and conclusion can be written in the last page। तो इस तरह से आप अपने टोटल पेजेस को 3 में डिवाइड कर लो, give them a bit of importance, give this idea the highest importance and then wind up
एट द लास्ट पेज विद दीज टू आइडियाज। ठीक है, इस तरह से आप इसको वाइंड अप कर सकते हो। डन। नाउ लेट अस से व्हाट एग्जैक्टली इज मार्क्सिज्म, लेट अस डिस्कस। तो मार्क्सिज्म की हम क्या बात करते हैं, जैसे मार्क्सिज्म का हम डेफिनेशन देते हैं तो कार्ल मार्क्स के केस में हम बताते हैं दिस हैपेंस टू बी द आइडियोलॉजिकल क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। एट द सेम टाइम द आइडिया वाज टू एस्टैब्लिश अ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट स्टेट, ठीक है, विच वुड हैव द कॉमन ओनरशिप, कम्युनिटी बेस्ड लिविंग, ठीक है, एंड अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यही होगा। एट द सेम टाइम आप यहाँ पे स्कॉलर्स का नाम ले सकते हैं कि by the writings of Karl Marx and Engels, this idea got proliferated and developed in the 18th century, 19th century Europe, है ना, 1858 के बाद 19th century यूरोप में। इस तरह से आप लिख सकते हैं। नाउ कम्स दी अनदर, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिखना है, तो इसमें एक ना पेरी एंडरसन का व्यू पॉइंट है। वो कहते हैं कि कार्ल मार्क्स जो मार्क्सिज्म है वो लेस ऑफ अ स्टेट डॉक्ट्राइन है, ये कोई स्टेट डॉक्ट्राइन नहीं है, स्टेट स्टैब्लिश करने का डॉक्ट्राइन नहीं था ये। इट वॉज बेसिकली अ क्रिटिकल टूल to identify the problems of the then capitalism। जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो वेव थी उसमें जो प्रॉब्लम्स थी, उसमें जो लगार्ड्स थे, इश्यूज थे, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, उसमें लूपहोल्स ढूंढने के लिए इस डॉक्ट्राइन को लाया गया था, या इस डॉक्ट्राइन ने वो लूपहोल्स स्टडी किए। तो हम कह सकते हैं दैट इट इज नथिंग अबाउट इट, दिस आइडिया इज नॉट लेस अबाउट द स्टेट डॉक्ट्राइन और मोर अबाउट द क्रिटिकल टूल ऑफ द देन capitalist system। Clear? Now what exactly is the relevance? ठीक है, अब कुछ कोर टेनेट्स आप बता सकते हो यहाँ पे, क्योंकि या तो आप पहले पैराग्राफ में मार्क्सिज्म में बता सकते हो, बता चुके हो, या फिर अगर वहां नहीं बताया तो यहाँ बता सकते हो। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्या क्या कोर टेनेट्स हैं और फिर आता है क्या रेलेवेंस है। अब मेजर फोकस इस क्वेश्चन का रेलेवेंस पे है, क्योंकि देखो ये 15 मार्कर है, तो 15 मार्कर में आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप इस बात पे नहीं है दैट यू आर एक्सप्लेनिंग जस्ट मार्क्सिज्म। आप 2 पेजेस मार्क्सिज्म एक्सप्लेन करके नहीं आ सकते, ये बात ध्यान रखना। यूजुअली स्टूडेंट्स कमिट दिस प्रॉब्लम कि वो जैसे ही दिस एरर दे कम अप विद दिस प्रॉब्लम कि वो जैसे ही मार्क्सिज्म को देखते हैं दे स्टार्ट राइटिंग डाउन दी कोर टेनेट्स ऑफ मार्क्सिज्म। क्वेश्चन वो पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन पूछा मार्क्स रेलेवेंस इन द करंट सेंचुरी। करंट सेंचुरी में मार्क्स का कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है मार्क्सिज्म का, ठीक है। तो मार्क्सिज्म आपने बता दिया, मार्क्सिज्म एज एन आइडियोलॉजी, मार्क्सिज्म एज एन आइडिया, एंड देन आप बताएंगे दैट हाउ इट इज रेलेवेंट। अब इसकी रेलेवेंस कैसे एस्टैब्लिश होती है, दैट इट हैपेंस टू बी अ क्रिटिक ऑफ द कैपिटलिज्म, इट हैपेंस टू बी अ क्रिटिक ऑफ इनइक्वालिटी, एट द सेम टाइम it is highly relevant idea in the social movements, it is a highly relevant idea to study the inequalities of the world, to study the poverty, global poverty, income inequality. Then at the same time this idea is also important to understand the problems of surveillance capitalism, that how the modern world capitalism is going anti-human in nature. In the name of the capitalism, consumerism is being promoted, कॉमोडिटी फिटिशिज्म इज बीइंग प्रमोटेड। वही सारे जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज हैं उसको आप एग्जाम्पल्स के थ्रू। वन मोर थिंग, वेन एवर यू आर राइटिंग रेलेवेंस, मेक श्योर दैट यू सब्सटैंशिएट योर पर्टिकुलर आइडिया विद द एग्जाम्पल। वट एवर पॉइंट यू आर राइटिंग दैट हैज टू बी सपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स हैपन्स टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो एग्जाम्पल को यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम एलिनेशन इन द डिजिटल एज, वही जो उसका आइडिया ऑफ एलिनेशन है दैट हैज बिकम मोर प्रोमिनेंट इन द डिजिटल एज। गिग इकोनॉमी सिस्टम, लैक ऑफ सोशल बेनिफिट्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एट द सेम टाइम कार्ल मार्क्स वाज राइट अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन, हाउ द ग्लोबल साउथ इज फेसिंग द एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसीज ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ। एट द सेम टाइम द बेलामे फॉस्टर का हमने शायद फर्स्ट में भी पढ़ा था, जब हमने कार्ल मार्क्स पढ़ा था, बेलामे फॉस्टर का आइडिया वहाँ भी पढ़ा था कि वो बात करता है किस तरह से इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है इन द नेम ऑफ कैपिटलिज्म। तो यहाँ पे भी आएगा कि कैसे एनवायरमेंटल क्राइसिस बढ़ती जा रही है इन द नेम ऑफ कैपिटलिज्म। एंड ऑब्वियसली द वेज गैप, जेंडर गैप, ओके, जॉब लेस ग्रोथ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रेलिवेंट है। नेक्स्ट कम्स, लेकिन क्या कार्ल मार्क्स वॉज राइट? नो, देर आर सर्टन ऑल्टरनेटिव्स एज वेल. If you talk about the liberal, if you talk about libertarians, if you talk about postmodernist, that economics is not just the only form of power. Power is highly diffused.
डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर, लियोटार्ड का, या फिर फूको का कॉन्सेप्ट, वो आप यहाँ पे क्रिटिसिज्म में ला सकते हो. देन ऑब्वियसली फुकुयामास डिबेट, एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट और एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट, वेदर इट इज द आइडियोलॉजी और इट इज द हिस्ट्री. इन बोथ द केसेस हम क्या बताना चाह रहे हैं कि देयर इज द एंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड देयर इज अ लिबरल ट्रियम्फ, है ना. तो यहाँ पे लिबरल ट्रियम्फ हो रहा है. तो अब लिबरल ट्रियम्फ होने की वजह से सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी बची है वर्ल्ड में, दैट हैपेंस टू बी द लिबरल आइडियोलॉजी. बट नेवरदलेस, ठीक है, यहाँ पे इसके जरूर फेलियर जरूर हैं, बट दिस आइडिया हैपेंस टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया टू अंडरस्टैंड द पोस्ट लिबरल न्यू लिबरल वर्ल्ड. 2008 के बाद का जो वर्ल्ड है उसे पढ़ने में ये आइडिया काफ़ी हेल्पफुल है. लेट अस से इन दी ongoing the global crisis, pandemics, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन क्राइसिस, रिफ्यूजी क्राइसिस, ये मार्क्सिज्म जो है ये इस बात को हाईलाइट करता है दैट द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इज एंटी ह्यूमन इन नेचर. ठीक है, इस तरह से यू कैन एंड दैट टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स. द आइडिया ऑफ मार्क्सिज्म becomes very important tool to identify or to understand the after effects of the capitalist system. Clear? समझ में आया? This was the easy part, है ना. अभी जो आज हमने टेस्ट डिस्कस किया वो इजी था. कल हम डिस्कस करेंगे फेमिनिज्म एंड कल फाशिज्म. ये दोनों जो आज होने थे वो कल भी होंगे. D12. So tomorrow we have same time, D12, sorry. कोई specific doubt? Are you writing and submitting? Actually I was not getting much time. एक तो एक PSIR का एक और कोर्स ला रहा था मैं, फिर मेरा अपना ऑप्शनल का कोर्स स्टार्ट हुआ. Then ऑप्शनल की ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, बट आई एम कीपिंग माई प्रोमिसेस, डोंट वरी. आई विल कंप्लीट दिस कोर्स इन द गिवन टाइम फ्रेम. द ओनली थिंग यू हैव टू डू फ्रॉम योर साइड इज कीप राइटिंग एंड कीप वॉचिंग. डन. तो what we have to do is tomorrow we are meeting for fascism and feminism. I have uploaded the paper. You can just, group is not open. Actually the problem is whenever I open the group people start spamming that. ठीक है, I'll कहाँ send करना है तेजल? I guess I have provided the drive link. I'll provide that again. Rather than messaging on the group, what you can do is I'll give you my ID. You can directly message on that ID. Okay, and the copy should be uploaded in the Telegram link. Oh sorry, in the drive link, Google Drive link. Copies to be uploaded in the Google Drive link. If you face any problem, you can directly message me on my Telegram message, Telegram handle. I guess that is @Kapil Sikka AA. Clear? Then कल मिलते हैं 7 बजे. I guess there are 3 days festivities, so let us meet at 7 tomorrow, so that we'll keep off on 1st and 2nd because of the नवरात्र and दशहरा. जितेंद्र हिंदी में नहीं चलती, आप हिंदी में ट्राई कर सकते हो. कंटेंट सारा इंग्लिश में है, आप इसे हिंदी में कर सकते हो. वैसे हिंदी के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड. आई सी, आई वाज प्लानिंग टू ब्रिंग वन मिक्स्ड बैच. एक मैं छोटा सा बैच लाने का कोशिश कर रहा हूँ. आई विल शेयर द डिटेल्स. तो अगर वो आपको सूट करता है जितेंद्र तो आप उसको देख लेना. दैट वुड बी अ वेरी नॉमिनल प्राइस बैच. ओके, एनी अदर डाउट? फाइन देन, मिलते हैं. बाकी आप
इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो फॉर ऑल द अपडेट्स, यू विल गेट ऑल द अपडेट्स ओवर हेयर। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से पे यू विल गेट द अपडेट्स। कल मिलते हैं फिर। कोई डाउट? चैतन्य, तनु, तेजल, नो डाउट एट ऑल। चलो, बाय एवरीवन, सी यू।